भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वो जमा होगा, फल तो नहीं जाएगा। लेकिन जितने परसेंट में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है, दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा भी इतने पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई अर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे कई बच्चों का बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। चलो क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत है, लेकिन खराब काम किया, खराब है, आपने ठीक समझा ये खराब है, ये अच्छा है, निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनकी खराब काम या खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो तो कोई खराब चीज अपने पास रखेगा समझदार, लेकिन आप खराब है वो दिल में समाना, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज। समझदार तो ठीक बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा
समीप आना नहीं है, आपको लाना है। ओम शांति।
स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है निस्वार्थ प्यार में लवलीन। अव्यक्त इशारे। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी को थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ी। जो साधन है वो भी कई बार साथ नहीं देते। अपनी साधना तो चल रही है, याद में बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं। सभी ठीक हैं।
कल शाम को शांतिवन के निवासी भाई बहनों के साथ मेरे ख्याल से 600 500-600 थे, कुछ रूह रेहान कर रहे थे पुरुषार्थ के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना, जो कहते हैं कि कोई माँ अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास ले गई तो बोला ये बहुत चीनी खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा 1 हफ्ते के बाद लाना। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो ले गया तो उसने कहा भाई बच्चे इतना चीनी नहीं खानी चाहिए। तो किसी ने कहा यही कहना था तो पिछले हफ्ते भी कहते। तो कहा तब मैं भी खाता था बहुत, इसलिए मैं कहता भी तो फायदा नहीं होता। तो मेरा भी ऐसा ही होता है। तो एक शब्द पर पूरी तरह से एक अनुभव हो तो वो लवलीन शब्द था। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार का लव बता रहे। तो जब मैं क्लास करा के आई, फिर कुछ लोग मिले, फिर भोजन खाया, फिर जब विश्राम करने के लिए गए तो एकदम ऐसा लगने लगा जैसे लीन हो रही है अवस्था, ऐसे जैसे एकदम। तो मैंने कहा ये तो अच्छा टाइम है लव लीन होने का, सब हर बात से निवृत्त हो गए, जो हमारा दिन भर की दिनचर्या थी वो पूरी हो गई। तो एक लवलीन स्थिति में जैसे ना अंदर में खींच हो रही थी बाबा की, और मैं उस लवलीन, ऐसे पहले भी मैं हमेशा जब विश्राम करने जाती हूँ तो बाबा की गोद में, बाबा का अपना सिर बाबा की गोद में रख के निश्चिंत होके सो जाओ। तो कल जैसे एक लवलीन स्थिति क्या होती है, आप लोगों को भी कईयों को अनुभव होगा भी, और लक्ष्य भी रखा होगा करने का। तो मैं भी यही चाहती थी कि जैसे नहीं कोई कार्य होता है, आप एकदम लीन हो जाते हैं, घंटों निकल जाते हैं। हम्म, हमारे पास देखो अकाउंट्स की बहनें हैं, वो लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। हम्म, तो तो जैसे कि एक अंदर में लीन, मतलब मगन हो जाते हैं। ये बाबा कई बार कहते हैं कि लगन तो सबको है, पर मगन होना नहीं आता। मगन नहीं होने से क्या होता है कि विघ्न नहीं विनाश होते। अगर मग्न हो जाओ तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे अच्छा थोड़ा अनुभव होने लगे। तो हो सकता है पहले भी होता रहा हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा टेंशन दे के देखो कि क्या हम लीन हो पाते हैं लव में। लव तो है, पर कभी कभी सूक्ष्म में संस्कार कहीं ना कहीं पुल कर रहे होते हैं, व्यर्थ में भी नहीं, नेगेटिव में भी नहीं, लेकिन जनरली भी। हम लोग हैं, हमारे पास माताओं को भोग बनाना होता है, तो हम उनको अगर सवेरे बता दें तो वो दिन भर यही सोचते हैं अब ये करना है, अब ये। हम कहते हैं भाई जाके आराम करो फिर बनाना। तो हम उनको 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले बताते हैं
कि आज ये बनेगा। जैसे उनकी बुद्धि जो है वो बहुत उसमें ना हो जाए, नहीं थोड़ी एक टेंशन हो, एंग्जाइटी होती है। तो हमको इस तरह के तो सबको अनुभव हैं, लेकिन बाबा के प्यार में लीन होना, उसके अनुभव को बढ़ाना है। उसमें क्या है कि अशरीरी अवस्था भी नेचुरल होगी, क्योंकि बाबा के लव में लीन है तो शरीर का भान नहीं रहेगा। देखो कोई भी स्थिति, लवलीन की स्थिति है चाहे अशरीर, कोई हम फोर्स से नहीं कर सकते, ये नहीं कि, लेकिन रियलाइजेशन, अनुभव, तो मैंने देखा कि लीन होते हैं तो शरीर का भान भी नहीं रहता है। ऐसे कई प्राप्तियां होंगी उसकी जो हम सभी, इस मास अच्छा अवसर मिला है। और खासकर प्रातः काल का जो समय होता है उसमें बुद्धि में इतना कारोबार तो नहीं होता है ना। तो आज का होमवर्क बाबा कह रहे हैं कि निस्वार्थ प्यार में लवलीन, लवलीन ही पर निस्वार्थ। बहुत, हाँ, कई आके कहते हैं कि हम मकान चाहिए, हम बहुत योग कर रहे हैं। तो एक बार दादी जानकी ने कहा, भाई मकान के लिए क्यों योग करते हो, अपने लिए योग करो ना। क्या हमारे सब, हम एकदम पावन बन गए हैं क्या? तो वो स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो ये होता है कि देखो बाबा को चाहिए सेवा के लिए, तो वो हमारे सामने आ जाता है। हम लोग कोई देखो अभी पीस विलेज बहुत छोटा होने लग गया है, क्योंकि निवासी कुछ बढ़ते हैं, कुछ विजिटर्स भी आते रहते हैं। तो अच्छा चल रहा है, 26 साल हो गए। पर हमारे साथ में ही एक बहुत बड़ा मोटेल था, होटल की तरह छोटा, 50 कमरे का। वो 4 साल से ऑक्शन पे आता था। पर हमको तो, हमने सोचा इतना काफ़ी है, क्यों फिर 10 मिलियन और लगाएंगे क्या? कितना समय संगम है, और हलचल इतनी है, यहाँ तो कुछ नहीं पता लगता है अब। और ज़रा भी आप न्यूज़ सुनो तो सब एक दूसरे के लिए, सबके हथियार तैयार हैं, सबके। हमारा भारत का इतना विकास हो रहा है, हर प्रकार से हो रहा है, बहुत लंबा इसका है। लेकिन उस विकास से क्या होता है कि बहुत देशों को, खासकर बड़े देशों को चुनौती लगती है, तो उतना ही डिफेंस भी बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे मोदी जी ने जो डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया, हाँ, जो कुछ मतलब कर रहे हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ज़रूरी है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो बाहर बहुत हलचल है। और आप में से जो थोड़ा बहुत, बहुत न्यूज़ तो ना हम सुनते हैं ना सुननी चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि रोज़ की बात है और रोज़ कुछ ना कुछ बड़ा हो ही रहा है। तो बहुत ही हलचल है, किसी दिन भी देर नहीं लगेगी। जो बाबा कहते हैं ना कि मैं तो उसको आतिशबाजी कहती हूँ, बॉम्ब्स की, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। तो आप में से कुछ को अनुभव होगा। मेरे को 2 वॉर इंडिया में, एक चाइना से हुआ था, एक पाकिस्तान से। तो जैसे ही आवाज़ आती थी, सायरन बजता था और जेट्स की आवाज़ आती थी 10-12, तो हम लोगों को कहते थे नीचे चले जाओ ना, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस नहीं थे, अंडरग्राउंड, छत के नीचे न हो, जो कुछ सिखाया जाता था। यहाँ भी मैंने देखा, ड्रिल कराई गई थी नहीं, जब लड़ाई लगी थी तो आते थे वो लोग, तो हमने देखा यहाँ से यूट्यूब में। तो कहने का भाव ये, जो एक लवलीन स्थिति होगी, अशरीरी स्थिति होगी, तो जैसे कि एक हम, एक कवच मिला हुआ है हमें, तो जो वो कवच में है तो वो हमारे तक नहीं पहुंचे। मतलब चाहे डर है सूक्ष्म में, या किसी भी चीज का प्रभाव न हो उस समय पर,
तो इसलिए अगर बाबा की प्यार से याद है, और योग याद अपने लिए, मैं सबको ये कहती हूँ कि क्या मैं एकदम पवित्र पावन 100% हो गई जो मैं इसके लिए योग करूँ वो करूँ। अगर हम योग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली औरों को सकाश मिलता रहता है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो खैर अलग टॉपिक है, पर बाबा कहते हैं कि जो प्यार जो प्यारा होता है, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ बाबा कहते हैं प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। दिल से हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो, तो बाबा कहते हैं, तब कहते हैं जब ऐसा प्यार होता है तब कहते हैं बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा कहते हैं तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा को मिल नहीं सकता। ये तो 100% है। कितना भी प्यार है, सच्चा है, परंतु आत्मा का आत्मा से जो स्नेह होता है, लौकिक में कहेंगे, अभी तो ईश्वरी रूहानी स्नेह है, उसमें लिमिट आ जाती है। वो कर्मों के आधार पर होता है। जैसे ही वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है, बहुत नज़दीक वाले दूर हो जाते हैं, तो लिमिट आ जाती है ना। कभी भी कोई भी आत्मा का प्यार निस्वार्थ हो नहीं सकता है। बाबा के बनते हैं, आत्मिक प्यार है वो निस्वार्थ होता है, रूहानियत वाला होता है। पर एक बाबा का प्यार, मेरे को तो जब ये बात समझ आई बहुत साल पहले, तो ऑटोमेटिकली बाबा से प्यार लो, बाबा से प्यार करो, ठीक है, फिर प्यारे होके रहो। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं ना कि सिवाय बाप के किसी आत्मा से निस्वार्थ प्यार नहीं मिल सकता, इसलिए कभी भी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ये भी लवलीन रहने का एक साधन होगा, एक विधि है। इस बात को समझना कि एक सच्चा प्यार बाबा ही हमें देते हैं और करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए लवलीन स्थिति, निस्वार्थ प्यार का अनुभव करेंगे। ओम शांति। दादी जी की विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं। सतो प्रधानता के गुण द्वारा तमोगुण को विदाई। दादी जी कहती कि मेरे पुरुषार्थ का तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं उन्हें खत्म करना है। मैं सवेरे से रात चेक करती हूँ कि देवतापन की क्वालिफिकेशन मेरे में कहाँ तक आई है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस ऑथोरिटी के बच्चे हैं, तो बुद्धि कभी नीचे की बातों में नहीं जाएंगी। अभी हमारी बुद्धि देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए।
ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त मुरली तारीख है 3 फरवरी 1976। धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे वैसी भी कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मैच्योरिटी के रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते, लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो। इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। बड़ी दीदी भी मेरी चाची लगे। ये अर्जुन है ना, अर्जुन की माँ, वो भी बहुत मस्ती में थी। अर्जुन नहीं, नीचे में अर्जुन भाई कहते हैं जिसको, इधर नहीं बैठा, हाँ, जिसको अर्जुन दादा कहते, उनकी माँ भी मेरी चाची थी। और ये आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। तो हम सब ऐसे एक मोहल्ले में रहते थे। तो बस हमारी तो सबकी लगन थी, जाते थे आते थे, दूसरी कोई दुनिया नहीं, मिलते थे, बस बाबा की बातें करते थे, बस इसी के लिए। तो सबके कारण मम्मी पापा भी समझते थे भाई दीदी के साथ जाते आते हैं, तो हमको तो साथ हुआ, फ्रेंड्स हुआ, फिर हमारी तो लगन बढ़ती गई और हम ज्ञान में आती गई। फिर तो बाबा ने क्या नहीं भाषण सिखाया और बोलना सिखाया, मंत्र सिखाया, गीत गाते थे, औरों को समझाते थे। फिर तो हमारी ज्ञान की मस्ती क्या थी, न खाना न पीना न सोना,
इतनी मस्ती थी जो बिल्कुल दुनिया की कोई स्मृति याद नहीं। फिर एक दूसरी हिस्ट्री सुनाती कहानी। उस टाइम में फिर हम आप लोग को सुनाती। उस टाइम में हम लोग तो छोटे थे, तो रंगीन कपड़ा तो पहनते ही थे, तो ना। तो क्या था, एक हिस्ट्री सुनाती हूँ, मुझे याद है, वो कभी नहीं भूलेंगी। तो जरा सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनते थे, चूड़ी चेन ये सब कुछ परा रहता था, जेवर भी पहना रहता था, तो रंगीन कपड़ा भी पहनते थे। तो क्या था कि बाबा का जो घर था ना, मैंने मसाता का पिया था, तो बाबा का जो घर था वो नीचे बहुत बड़ा था और ऊपर कोठा था। वहाँ बाबा की एक नहीं भाई एक बरसाती रूम होती है ना, ऐसे एकांत की रूम बाबा की ऊपर थी। और तो बाबा बहुत करके उसी रूम में ऊपर रहता था एकांत में। तो क्या हुआ कि हम नीचे से आ रहे थे, हम 3-4 सखियां थी, लीला ये सब की कनी, हम सभी 3-4 सखियां आ रही थी। बाबा कोठे से हम लोगों को देखा, तो देखा हम लोगों को तो रंगीन कपड़ा पड़ा था, कुछ जेवर भी पड़ा था। तो और हम लोग रोज आते थे, और बाबा का घर था बिल्कुल बाजार के बीच में, बाजार के बीच में था ना, बिल्कुल बाजार के बीच में था। हम लोग का घर आप बाजार के बीच में नहीं था, हम लोग तो टकरी पर रहते थे, पर बाबा का घर बिल्कुल जैसे बाजार से पास हो ना, वैसे बाजार के बीच में था। तो दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे, वो कोई बाबा देखते थे, हम तो नीचे से आके, तो हम आई अंदर। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो सीधा ऊपर आ गए। बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, हम तो डर गई, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, पता नहीं क्या काम है बाबा को। काई जरा बेटी, तुम्हें पेंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतांबर वाली से शादी करनी है, ये पहला सवाल बिल्कुल हमारे से बाबा ने शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं पेंट कोट क्या होता है, पीतांबरी क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं, शादी की बात क्यों बाबा पूछता है, हम समझे नहीं। तो कहा मैं पूछता हूँ कि तुम्हें श्री कृष्ण से गिरधर से शादी करनी है या लड़कों से शादी करनी है। मैंने कहा मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे कोई लड़के से थोड़ी शादी करनी है। तो कहा ये जेवर क्यों पहना है, ये रंगीन कपड़ा क्यों पहना है, ये वो पहनते हैं जिसको लड़कों को पसंद है। ये एकदम बाबा का शब्द है। वो दिन ये दिन ना हमने जेवर पहना न रंगीन कपड़ा पहना, उसी दिन रंगीन कपड़े को त्याग। शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी, वो प्यारी दादी होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। Om Shanti. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Remain absorbed in having altruistic love. Those who are loving do not need to be remembered, but they are automatically remembered. Simply let there be love in your heart. Let it be true and altruistic love. When you say, my Baba, lovely Baba, you can never forget the one you love. You cannot receive altruistic love from anyone except the Father. Therefore, do not remember him with any selfish motive,
but remain absorbed in having altruistic love. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 7. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Today's topic: remain absorbed in having altruistic love. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Is everyone merged in God's love? So I won't be asking how are you, right? Because if you are merged in God's love, there will be so much joy, super sensitive joy, unlimited joy, right? It's only at conference age that we get God's love, only at conference age. And we have to feel that love so much that we become not only loveful, but our love for God continues, right? Even Baba says, I am not in golden age, but Baba's is with us in the sense of this combination which Baba gave today of action and dharma. Instantly Brahma Baba came in front of me and I saw his routine was 18 hours. And it was there, even whatever we know his age was, what it, like he will wake up in the morning, 2-3 hours, at least personal time, chit chat with Shiv Baba, and kind of absorbing in a silent way what he has to give as Shrimat to children, what answers he has for children. So if you look at then by 9 o'clock, Baba will come, sit in the cottage, in the hut, 2 hours, 3 hours to answer the letters. And then he took break, and then before lunch he will walk around in the kitchen, go all over, and then he will have lunch. And a very short time rest. And then of course Baba in the evening, 5 to 7, will just, as if he is giving sakash to the children and invoking children worldwide, right? Not only in Bharat, but that's how double foreigners also felt the call of Brahma Baba. And then have dinner, then again in class. So it was quite a action for everything. But this whole thing of dharma is, if we ask people these days, Baba's children, we were so busy that we didn't remember Baba much. Busy in what? Baba's seva, right? Or only seva. So much with action that dharma is forgotten, Baba is forgotten. Actually, service happens whenever there is action and situation which comes. So I'll give an example. There was one person very against Brahma Kumaris, and he decided to talk with one of the sisters. 1 hour he kept saying different things.
asking different things. And this sister had so much patience. She never showed frustration, never showed she's tired with his questions. And after 1 hour, he said, "Sister, tell me now, whatever you tell, I will do." There was so much transformation only because of her patience, her sweetness, which continued. Her way of talking was very gentle, but very much with authority. So, what is serving is the quality. It's not the words. No. I remember in Peace Village, when people come, they don't look at what food is being served. They look at those who are serving. So they write smilingly serving. So what they're talking about, their smile more. Then, of course, after eating, they will say good food. So dharana is what is serving, right? Otherwise, you are only doing good karmas, right? So how dharma and karma, if they remain, you do unlimited service. So Baba is saying, remain absorbed in having altruistic love. Those who are loving do not need to be remembered, but they are automatically remembered. Simply that there is, Baba says that simply let there be love in your heart. Let it be true and altruistic love. When you say, generally we use the word, Baba says, when you say, Baba, lovely Baba, you can never forget the one you love. You cannot receive altruistic love from anyone except the Father. That is 100% sure, right? Therefore, do not remember him with any selfish motive, but remain absorbed in having altruistic love. Now, many come in Gyan and they get what they wanted. They don't come because they got what they wanted. So that's called like I came for some needs or some desires, something was lacking in the life. But we all came because we want to serve Baba. We want to be making our life elevated. We want to become pure. It's very interesting that why I decided to live the life of purity, because when it came that Baba said that even hermits and many, those who are supposed to be living life of purity, or even grasthis after certain age. But now Baba needs power of purity. So when you live pure, your power of purity will be for world transformation. And I instantly said, wow, that's good. So it's like we were motivated for not only personal life, but also world service. Anything which touches us and we say for world service, we naturally do it, right? Altruistic love. Om Shanti. Om Shanti Didi. How are you? How I are think you doing? I am doing very well. I think you're It's still just jet lagged because you look so fresh. You look as though you're the New York look. You have the New York look. You don't have the India look as yet. yeah, jet lag. It has timing, right? That's So right. here we have many hours in the morning because we are so early up. So Bhumiben, we spend a lot of time with Baba, and so yeah, very fresh. So that's what I'm calling the New York look. You're still on New York time. Right. Thank you.
So this is a very interesting type of love that Baba is talking about. And I went back to some of the Murlis, and he was using the word altruistic as selfless love. So I was wondering, what's the Hindi word that is translated as altruistic? Niswarat. So it's selfless. Niswarat is without any selfish motives, Swarat desire. is selfish. Swarat is selfish. Niswarat is altruistic. Altruistic or selfless. So if I were to try to understand from an English speaking perspective, the word altruistic love, Baba talks about altruistic seva, but in this particular one, he's talking about altruistic love. And from an English understanding, it means selfless. It means a compassionate love directed toward the well-being of others. And the well-being of others would involve acts of kindness, of generosity, and of sacrifice without expecting anything in return. So when Baba uses this term, you cannot receive altruistic love from anyone except the one Father. In other words, what he's saying, none of you can give altruistic love. You can only receive altruistic love. But maybe what he's saying there, you cannot give it. Unless, of course, and I'll ask you, how is it then possible for us to give altruistic love? Is it what he said on Sunday, that we can give it if we are instrument, if we're humble, and if we have pure nature, pure intention, pure words? Would that be a basis that I can be an instrument to give altruistic love? Because he's saying you can't get it from anyone else but the one Father. That means you cannot give it on your own. Am I understanding that right? I think the definition of altruistic, of kindness, compassionate, and generosity, very good definition. Now, when it comes to us as Baba's children, we can share altruistic love because our love is spiritual love. And when it is spiritual, soul conscious love, it is altruistic. Because in soul conscious love, what am I expecting from anyone? If the love is where with, of course, is a human being, soul in the human being form, but there is some kind of expectation, dependency, something is always there. But as much we become soul conscious, I remember one time, Dadi Janki, we were sitting in New York in a Vyakti Bhavan in our bedroom. Dadi was sitting there and some of our main teachers. And Dadi said, you all just have to be loving. So one of the sisters said, but no, I want to be detached, because when you are loving, people are kind of around you, more close. And so I am very detached. So Dadi said, no, when there is purity, that love will never have any attachment because of soul consciousness. So I can say, yes, we can have altruistic love, soul conscious love. So if you look at spiritual love, soul conscious love is different from lokik. It's alokik. So I think I feel that yes, we can share altruistic love with others, because that's what we receive from Baba, right? And we receive because the soul receives, right? But a Soul is soul cannot, yeah, but can a soul
give another soul altruistic love without Baba's presence in between the two souls? When we're receiving from Baba, so definitely Baba is there in between. No? I mean, how do we don't know each other, right? In a lokic way. We don't have any relationships, right? So it is soul to soul, and also because we are Baba's children, right? So as you said truly that it's because of Baba in soul consciousness, and also because of Baba. So we keep Baba in between. No? Whether it is listening to someone, whether it is what we have to do for someone, because of Baba, you know. So Baba gave us, we and soul consciousness, then share with others. Yeah. In Dadi's written piece today, she said one of her spiritual efforts is sattva guna. She wants to become this, she wants to aspire for these gunas in their purest stage. And of course, the gunas, they are connected to the virtues. And so for hers, one of her virtues that she's aspiring to was purity. So if we are aspiring for this altruistic love on the basis of purity, one of the things you talked about was the dharma in the karma. And I am going to rephrase that and say dharna in the seva, because we all aspire to do altruistic service. So bearing in mind this satya guna of purity that Dadi spoke about, there are different types of altruistic love in a Brahmin's life. One is altruistic love in seva. One is altruistic love in the family. One is altruistic love for the yajna. Would you like to comment on these three and add if you feel there is altruistic love in other areas? Yeah, but before that, I want to tell a little bit about Satogun. These gunas are not virtues. These gunas are like quality, you know. That means What's the difference between? In tamo, there is ignorance, there is darkness, and you know, it's like full of desires. Rajo is where something is adulterated in you. No, because in Gita, when we talk about food also, tamoguni and then rajoguni. So rajoguni is, because sometimes we have food left from yesterday, right? So we keep in the fridge. In the morning, we make breakfast, right? So some people, I know in one family, there used to be fight between husband because she will mix it and he will say, let's enjoy the fresh one. And then we will, if we have to use it, we will do it. But satoguni is when you prepare it, it is fresh and you remember Baba, you offer it to Baba. Satoguni. So same is our stage. You know, tamoguni person will have certain characteristics, making promises, not fulfilling them, and it's like very selfish ways. Rajoguni sometimes this, sometimes, and Satoguni person is very honest, very clear, very much not into gossiping. They don't like my ears to be used. Anyone complains to me and I say, no, not my ears, I don't want to listen. No, so you're not interested into anything which is not positive, which is not pure. And you want to maintain your sato stage, you know. So that is one thing. And now, as you said, the categories of altruistic. All right, let me just clarify that. So the sato, rajo, and tamo are qualities of being. So it's not quality. the virtues. It's Not the quality. virtues.
Yeah, quality. Yeah, but I'm just saying the qualities of beings will be associated with a virtue. So my purity of Rajo is mixed. My purity of Tamil is non-existence. My purity in Sato is at its peak. The point I'm trying to ask for clarification, Didi, does it exist outside of a virtue? And it is just a quality of being outside of a virtue, the gunas? See, Sato expressed in personality is your thoughts, words, and actions, right? So virtues are in those. Our thinking will be, Satoguni person's thinking will be always very pure, always beneficial, always elevated, and the words will also be enlightening, encouraging, full of enthusiasm, and actions will be same. So a person is recognized by thoughts, words, and actions. So Sato person, like Dadi Prakash Mani said, that's her aim, was obvious, right? The way she thought, the way speak, the way she did seva also. So automatically, it's like our personalities and our thing describes that this soul is a Rajogini because keep fluctuating in virtues also. And Tamoguni will keep promising, keep saying it, but will never fulfill it. So this is how it works, is as you said, virtues and thoughts, words, and actions. Okay. So And Satogun, the quality of the soul, expressed into thoughts, words, and actions. And those are of virtue. yeah. Okay, I think I got it. And what are the types? Because we already at 8:30 here. And so what are the types you think of altruistic altruistic love in the Brahmin family? Seva, family, yajna. Seva, family, Yajna. Huh? What else? So what you all think? What else? Outside, of course, the soul with the supreme soul and the soul to the soul. The soul to the soul would be family love. The soul to the yagya would be to Baba, the flame, Bapdada. And the altruistic love will then be this selflessness in serving, the humility, the instrument consciousness. That was what I was thinking when I'm saying, how do I make sure I'm expressing altruistic love in my Brahmin life? And I started making a list. Yesterday or day before, we were talking about bhav, bhavna, and swabhav, and bol, 4 things. So when bhavana changes into kamna, kamna is desires, right? So very good bhavana, you start seva, and then desires, We forget that this is Baba's seva, Baba will do it. I comes in, I and mine, and you could see little favors, little creating obstacles. And, yesterday I was telling them that if you deny someone something, is that person breaking the rules, regulation, or because that person doesn't get along with the instrument? So I said, there is possibility that 2 instruments or some younger one don't agree with me, or I don't agree with them. But why will I create obstacles in Yajna Seva? No? So Dadi Gulzar one time really gave me congratulations for saying, that's one thing I have never done, even if I don't get along with anyone. But you are instrument for a particular service. I will not block the service because
is creating obstacles in yajna. But sometimes it does happen, certain decisions are taken only because I couldn't get along with that. So I was telling them that we have to create proper rules, regulations. Okay, if someone disagrees or doesn't do properly, then you say, okay, you will not be allowed to do this, or you won't get certificate, or you won't get this. So, but it shouldn't be because of two souls, getting, because sanskars are different, and we live, we coexist. Still, we have spiritual love, but we are very different. So I think that keeping our dharana, our actions neutral. So I'm not blocking anyone's seva because it's Baba's seva, right? So little bit attention on dharma while doing karmas. Sometimes we forget dharma and we are so much in karma. So anyway, these are very deep topics. And also, as you mentioned, the family love gets damaged by the same thing, in which when the sanskaras clash, rather than a few neutral ones come in and uphold the platform, the spiritual platform, we're trying to please one against the other, and that damages things. To me, very much. Whereas while they're resolving their sanskaras, maybe the neutral ones should come in and hold the yajna and hold the family together while a few members sort out their sanskaras. Okay, it's a trick question for you. And the final question is altruistic love by effort or love by fortune? I think it's both, because you have that, but you have aim also, no? So sometimes you have to make efforts. Sometimes it's natural, right? And sometimes you remind yourself that as an instrument, Baba has chosen you for a particular thing. My sanskars doesn't match you, but I still always feel, so I think that I have to make effort, right? So it's fortune and also effort both, no? Even if I have fortune, but I have to make effort. And when I make effort, that means I remind myself, this is my aim and this is what I have to do. That's effort, right? Yeah. So I make effort. I make effort to be an instrument for altruistic love, but I don't make effort to receive Baba's altruistic love. He says, just keep saying lovely Baba, sweet Baba. What did he say? Something like that. Lovely Baba. Just simply keep saying that from your heart and you will receive it. So something about making efforts for love doesn't sit well with me, because I think love flows from the heart in a natural way when the dynamic is right, when the dynamic is pure. I mean, you have experience, we have experience from with Dadi Prakashvani, right? So Dadi used to love you, you had a lot of love for Dadi. And with Dadi, there was very natural altruistic love, right? But then sometimes Dadi gave certain directions to certain souls, then they kind of sulk about it and they're not really happy about it. But they still then think about, no, Dadi said this must be her love. She gave me this direction, maybe it's because of love. So a little effort is required in that. No? Okay, thank you, Didi, and happy Satguruvar to you. And are you offering Hope today? No. In Shantivan? Generally we offer in a Vyakti Parivar, but here is early morning. I know, but Rukmani Van is offering. Okay, so lots and lots of love.
And love big to you, cell. Bhumi. I'm hearing you whispering, but I can't see you. Yes, I'm here. Show your Okay, face. everything is good in New York. So far, yes, I was in Boston, and Dave is joining you. He must have arrived now in Madhuban, in India. So I had a really good time in Boston, tying Rakhi. And Sister Mohini, I did my chart, and I must say, I was content. I asked all of them at the center if they were content with me. They said yes. And then I'm sure all the students were content, and there were about 200 students both days. And so it was a very beautiful turnout. And so I accumulated for that trip to Boston. So I was just checking to see if I accumulated. So I'm very proud of myself. I was so content. So how are you, Bhumi? Are you content? Yes, very much. What kind of a tone is that? Yes, very much. That's how you sound. Yes, very much. There is nothing else. It's all contentment. Good, because you're in that sacred space, right, of Madhuban. Yeah, so much So love anything here. you want to tell us? You want to tell us anything? Happy Rakhi, happy Raksha Bandhan. We've got that beautiful message from Didi. This year means this is my first Raksha Bandhan in Madhuban in whole Brahmin life. Actually, I never been here for Mm, day. There's so many sisters who come and tie Rakhi. So it's just I'm just enjoying the whole scene in drama in Madhuban. And one thing I want to say that yesterday Mohini Didi met Shantivan Nivasis, you know, so in Dadiji meeting hall. And I was sitting there and I was just like lost in that atmosphere in Baba's love. And I felt like all dadis were sitting there and Mohini Didi is giving class and everyone is like statue. Nobody wanted to move for 1 hour and it's just beautiful, so beautiful. I can't even express how it was in words, but it was amazing. Like how When we came out, they say, oh, class should be at least 2 hours. 1 hour is not enough. But that happens when the souls are thirsty. And so when they're being given something to quench the thirst, of course they will enjoy it and enjoy it and enjoy it. the atmosphere was so powerful and beautiful. Like you just don't want to come out of it. Like you That's just want to sit beautiful. there and just keep listening. It's just like Baba is saying, Dadis are saying something, even though they are using Didi's mouth or whatever, as an instrument. But it was all from Baba and Dadis, so it's amazing. I had been saying that in everyone's, what should we say, in the system, there is little bit of every Dadi. In every Baba's children, those who little bit from Dadi Prakashmani, Dadi Janki, from Didi, Dadi Gulzar. No? So everyone has little part of their love, their teachings, and their presence. No, sometimes when they say Dadis are not there, I said, but we all have to create that presence of Dadis through us. No, not keep saying there are no Dadis. But maybe in each one of us there is little bit of what Dadis have given us so that we can sustain the yajna. I don't know if you know that in Dadiji meeting hall, in one wall, there are big pictures of Dadis. 8 Dadis on one wall, and then back wall, that's Mama and Baba. Big ones. And one wall has a whole history of Yagya. Right. So it's like walking into the Avyakt region and you're meeting them life size. Yeah, they're there waiting for you. I was telling clock, just stop there. We just want to be here. So Didi was doing the class in Dadiji's meeting room. Is that where she did the class? Because they Beautiful. have something going on in Gyanmoti.
So generally used to be there, but right now it's occupied. So but it wasn't enough. The space was not enough. So half of them were standing outside. It was missing. But Yeah. Maybe she we'll has plan. to go to the conference hall next time. That's what they were thinking. Yeah. Anyway, thank you, Okay. Veteran. So lots of love. Shanti. All right. Om Shanti. Good We night. Good morning. we will invoke Hola Vyakti Parivar for Rakhi. We have beautiful experience. Saturday will be Rakhi celebration. Yeah, and Sister Didi, I visited Ram and Rupali and Adi's home, and my gosh, that home is so clean. I've never seen such a clean home. And so I asked It's Rupali, all, "Ben, who cleans this home?" She says, but "She no, because cleans it." it's also new, no, newly Yeah, built place. So yeah. right. So I Anyway, they had a nice time with them. very good. Okay. Yeah. Om Shanti. Shanti. So tomorrow is Friday, and our schedule from Amrit Vela. Sorry, tomorrow is Thursday, and our Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, 5 to 6 p.m. English Sankar Murli. Together with that, in breakout room, a Vyakti Children Murli class, 6 o'clock Bhatti will start, followed by Bhog offering, Hindi series, English series, and chit chat. So now let's remember Baba and take drishti from Didi.
ओम शांति। ओम शांति।